करते हैं। So guys, today we are going to discuss very interesting and amazing topic. We are going to create the loading bar with the help of HTML and CSS. So stay connected with me, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और लाइक करना, शेयर करना, अगर कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस हम बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड गो थ्रू कर रहे हैं, किस तरीके से आप अच्छी सी लाइव स्ट्रीमिंग की हेल्प से एक इंटरेस्टिंग सी और मज़ेदार सी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी लोडिंग बार। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ोल्डर्स क्रिएट करूँगी। सबसे पहला फ़ोल्डर है index.html, जो कि आप सबको पता है इट्स अ मैंडेटरी। इसी के साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द index.css, इट्स ऑल्सो अ वेरी मैंडेटरी। तो यहाँ पर हम index.css के लेबल्स दे देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेती हूँ, दैन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर। सो आई हैव 2 फाइल्स राइट नाउ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मेरे पास इस वक्त 2 फाइल्स हैं HTML एंड CSS की, जिनके ज़रिए मैं बहुत ईजी और अमेजिंग मेथड से क्रिएट कर सकती हूँ कोई सी भी इंटरेस्टिंग सी लोडिंग बार। all the files with the help of HTML and CSS. अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लिंक क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी की हेल्प से जो बाय डिफ़ॉल्ट टैग से वी आर गोइंग टू ओपन इट हेयर, इसके बगैर आप अपना वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर हेड के टाइटल के नीचे और हेड के ऊपर आप सब लोगों को पता है कि वी आर गोइंग टू गिव हियर द लिंक एज रेफरेंस। यहाँ पर हम CSS की फ़ाइल कनेक्ट कर लेते हैं एंड रिलेशनशिप फॉर स्टाइल शीट। So I close this relationship here. So after that we are going to move on. अब यहाँ पर हम कुछ क्लासेस क्रिएट करेंगे। इफ़ यू रिक्वायर द सोर्स कोड आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस हम कुछ क्लासेस क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहली क्लास हम बना रहे हैं यहाँ पर डॉट स्पिनर की। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ डॉट स्पिनर। इसी के अंदर जितने भी डॉट्स आपने बनाने हैं उसके हिसाब से आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर 8 क्लासेस जनरेट कर रही हूँ, जो कि अगेन वी आर गोइंग टू कॉल फॉर द डॉट स्पिनर। लुक लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं अगेन डॉट लगा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी हमने वही सेम क्लास खोली है। तो दोबारा से इसको चेंज करने के लिए वी आर गोइंग टू कॉल इट हियर अनदर क्लास। अब मैं इसी क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। 4 5 6 7 एंड देन 8 डिपेंड कर। अब हम आते हैं गाइस इसकी CSS की तरफ एंड देन वी आर गोइंग टू शेयर यू द CSS। So here is the CSS. Okay. सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर अपनी पहली क्लास इसको कॉल कर लेते हैं, जो कि है डॉट स्पिनर। इसी के साथ साथ मैं कुछ क्लासेस बना रही हूँ, इनको मैं वन टाइम डिज़ाइन कर लूँगी, तो फिर मल्टीपल टाइम आई कैन ईज़िली कॉल ऑल दी क्लासेस। यहाँ पर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है 2.8 EM
Now close this, move on the next. इसी के साथ अब मुझे यहाँ पर स्पीड के लिए चाहिए क्योंकि मुझे उसको रोटेट कराना है, दैट्स व्हाई आई जस्ट कॉल इट हियर फॉर स्पीड। तो यहाँ पर भी मैं स्पीड को बना के होल्ड कर लेती हूँ 0.9 seconds. After that we are going to implement here the color. तो यहाँ पर मैं again UIB color, तो यहाँ पर जो कलर कोड ऐड कर रहे हैं वही ओवरऑल सारे डॉट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे हम, तो मैं बार बार कलर कोड ऐड करना नहीं पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कलर कोई सा भी चेंज कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली डिपेंड ऑन यू। Here is a color code. So here is the position relative. After that we are going to take here the display, flags, so align item, centered, justify content में मुझे, so here is the justify content. We are going to take here the flags start. After that we are going to implement here the height variable. अब हाइट के लिए ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द वेरिएबल्स जो कि हमने ऊपर बना दिए हैं, UBI साइज, एंड अगेन विड्थ के लिए भी सेम प्रोसीजर। So here is the width, then the variable, same like that, ठीक है जी। इस तरीके से you can easily design the method if you want. Thanks Mr. Latif for liking our content. आपका support, they are the highly appreciable for me. Thank you. Hello Mr. Suhail. If you have any queries guys, then you can ask me. आप कोई भी क्वेरी पूछना चाहें बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। Okay, move on the furthermore. So here is another. अच्छा, इसके बाद we are going to create here another class. So यहाँ पर अब जो हमने इसकी सब क्लास बनाई थी, then we are going to call it here. So dot dot, move on the next. तो यहाँ पर सबसे पहले we are going to take here the position is absolute. Literally thanks for everyone for sharing.
It's quite appreciable for me and encouraging me. You are supporting me well. Okay, move on the next. इसी के साथ टॉप रखते हैं हम 0. So here is the top 0. After that we are going to implement here the left 0, and then display is flags. So after that we are going to implement here align item center. So here is the align item. Move on the next. You are going to take care the justify content. Again we are going to take here the flex start from the beginning. After that we are going to implement here the height as well. So यहाँ पर height रखते हैं 100%. इसी के साथ we are going to implement here the width as well. It's also 100%. ठीक है जी. So move on the next. अच्छा यहाँ पर अब मैं सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर रही हूँ डॉट स्पिनर डॉट पे. So here is the before pseudo class. Okay. So before के अंदर we are going to take here the content. After that we are going to implement here the height. It's gonna be 20%. Width at least starting से 100 तक लेके जाना है, तो we are going to take at the beginning on the 20th. So here is the border radius 50%. After that we are going to implement here the background color क्योंकि already we are going to provide on the top, so we should need to call in a variable UBI color. ठीक है. If you want to change as well आप आसानी से इसको change भी कर सकते हैं. It's totally depend on you. So after that we are going to transform. Here is the transform and the scale 0. Move on the next. Here is the opacity. We are going to implement here 0.5 hold कर देते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता 0.5. Okay. Move on the animation. What we are going to implement the animation effect. Here is the pulse. We are going to take the name of animation. जो भी आप animation provide कर रहे हैं, you should need to call the same name. Here is a variable. So we are going to create here the UI speed. It's gonna be multiply 111 and then is an out effect. Okay, move on the next property. अच्छा इसी के साथ is an out के बाद I should need to provide here the infinite. Okay, move on the next. So implement here the box shadow. (20px) then RGBA. Here is the RGBA color. So 18 tab 31 tab 53 tab 0.3. Okay, move on the next. So first of all we are going to implement here the child one by one. यहाँ पर हम 1 by 1 child connections को fill out करेंगे.
I just implement here the vertical life. Okay, move on the furthermore. So यहाँ पर we are going to call here the child one by one. So we are going to out from this. Okay. So first of all, we are going to call here the first child and second child. Furthermore, we are going to call here time to time. So सबसे पहले second child पर आते हैं. So here is call and a child. सबसे पहले child हमारे पास 2 है क्योंकि 1 की सेटिंग तो ऑब्वियसली हमने कर दी है. So here is the rotate. So transform. Here is rotate 45 degree. Out from this second child, move on the next. अब इसी के अंदर मैं सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देती हूँ सेकंड चाइल्ड की. Before, here is the animation. Call here the animation delay. So again, calculate. The same UBI speed आपने already get की हुई है. Then we are going to multiply this speed minus 0.875 is gonna be multiplied with the help of this speed. We are close this. Sorry, I forget here the variable. Okay, it's fine. Variable के बगैर मैंने कॉल कर दिया, तो जबकि it's not a correct way. You should need to take here the variable. ठीक है जी. Move on the next. Here is the next child. Same rotation, same method रहेगा. If you want to copy of both of top values, then you can easily call. So here is a 3 child. Now we are going to rename it. So again the transform. So again we are going to take here the rotate. So यहाँ पर we are going to take here the 90 degree for the rotation level. After that we are going to move on. So we are going to implement here again the before pseudo class. I just change here the name. Here is take here the 3 because it's a 3 child. Okay, now move on the next. Again animation delay. Same procedure we are going to call here. Calculate variable. Here is the speed. So slowly we are going to multiply all the speed minus 0.75. Move on the next. Here is again call the class. Same way procedure, and now you can call it 4, 5, 6 जितनी भी आपको animation, then you can call it multiple time. तो यहाँ पर हम इसको 4 कर देते हैं. And then we are going to again the transform, rotate. So यहाँ पर मैं 180 डिग्री होल्ड करा लेती हूँ, या बल्कि मैं 135 डिग्री, पहले 135 डिग्री होल्ड करा लेते हैं. Move on the next. Again pseudo class. Here is change the right area to 4.
Now move on the next. Again, animation delay. So animation delay again, calculate. Here is called the speed. Minus 0.625. So move on the next. Here is the 4. After that we are going to call here the 5. We are going to take here again. Here is the transform. Rotate. Here is the 180. Take here the 180 degree. Furthermore, we are going to switch here another. So implement here again the delay method. Before pseudo class, implement here the 5. So same like that, if you are gonna implement, so you can change here time to time and call that. So here is the animation delay. So again we are going to implement here the calculate, then the variable, speed. So top value is we are going to provide here the minus 625 value. Let me check. Okay, now we are going to implement it here again, multiply minus 0.5. Now move on the next. We are going to implement again next child. Here is the 6. If you we are going to take here the 8 level, so you can change the values time to time. So here is the 6th one. Again the transform property. So the transform, and then we are going to take here the rotate. So rotate we are going to take here 2 to 5 degree. Okay, move on the next. After that we are going to implement again the same procedure of the pseudo class. Here is the 6th one. So I change the name of 6. Okay, fine. Then again implement here again the animation delay. So here is the animation delay. So again we are going to apply the function of animation delay. Calculate. Here is a variable. Here is the speed. Gonna be multiply. So minus 0.375. So move on the next class. Here is the dot. Sorry, again we are going to pass here I think 7. So again let me check. Okay, we are going to implement here the 7 class. So here is the 7. So again transform. So we have the 8
classes, transform, rotate 270 degree. Move on the next pseudo classes. So here is 7. Change the name of 7, and it's quite convenient for you to call. Again, we are going to take here the animation delay. So we are going to provide you the different scenarios. Calculate variable, speed, multiply minus 0.25. Here is last on the list, the 8. So again, transform, so again rotate 1 degree. So move on the next. So again, the last on the list, the pseudo class of 8. Here is 8. So here is the animation delay. The calculate variable, hello KPG gamers, how are you? So here is again we are going to implement here the speed as well as, so again we are going some parameters here. Okay, finalized. So move on the next. We are gonna sum up our working. So here is we are going to apply here the some animations or the keyframes. So we are going to implement here the keyframe identifier name. We also provide here the pulse on the top. Do you remember? You should need to call the same name, otherwise it's gonna be hurdle for you and it's not working well according to your demand. So here is 0%. After that we are going to implement here the 100% as well. Now move on the next. So we are going to transform. I hope here is it's the vertical screen, so you know see the result, but I am gonna easily see the result. That's why I share with you in the end. Opacity we are going to, because I'm gonna set the screen according to our requirements. 0.5, move on the 50%. Here is a transform skill. Here is 1, and then again we are going to implement here the opacity is going to be 1. Okay guys, here is the final result we are going to share with you. So let's see what gonna be the final view. After that we are going to share the final result with you.
share with you in a browser. I hope browser never seen your screens. So after the result I will show you, then I will share in your screens in a vertical format. Okay, so I add the screen and you can easily see what I wanna share with you. So I'm gonna share the final result with you guys. सो हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट इन योर स्क्रीन्स. आप देख सकते हैं इजीली जो है वो रोटेशन आपके सामने हो रही है, और जो भी लोडिंग बार है इट्स गोना रोटेशन आपके सामने हो रही है, और जो भी लोडिंग बार है इट्स गोना बी वर्किंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई होप गाइस लेक्चर क्लियर हो गया होगा. So this is the very easiest method if you want to create the loading bar with the help of HTML and CSS. So we will meet inshallah another tutorial. So stay connected with me. वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें. And thanks everyone for commenting good comment. So अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं another informative exciting tutorial के साथ. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.